Nitro Screen Reader. The following keyboard shortcuts can be used. हेलो बच्चों, आप सभी का नोएडा शॉर्टहैंड क्लासेस में स्वागत है। आवाज आ रही है? चेक करें एक बार। क्या आवाज आ रही है भाई? हेलो हेलो बच्चों, आप सभी का नोएडा शॉर्टहैंड क्लासेस में स्वागत है। चलो, तो आवाज आ रही है? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका पेपर होने वाला है एसएससी स्टेनो का रिटर्न का, बेसिकली उसके बाद आपको डिक्टेशन मिलेंगी, डिक्टेशन की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं, कि आप सभी को अच्छे से तैयारी करवा पाए अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो अभी क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं डिक्टेशन की सीरीज, ठीक है। उसमें मंडे टू फ्राइडे जो है, मैं कोशिश करूंगा आपको डेली एक डिक्टेशन जो है लाइव दिया करूं, और आप सभी लोग उस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जिनको अच्छा लगेगा वो शेयर भी कर सकते हैं, हमारा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कंटिन्यूसली बने रहेंगे तो आपको डिक्टेशन जो है, क्या कहते हैं, मतलब बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। अभी तो हम डिक्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े दिनों में फिर हम हार्ड वर्ड की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पेपर में जरूरी होते हैं करने के लिए डिक्टेशन लिखते समय, फ्रेजेस होते हैं, उन सभी को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये लाइव डिक्टेशन रहेगी। और पहले जो है, आज हम 80 वर्ड पर मिनट पे इसको लेंगे डिक्टेशन को, ठीक है। इसमें 840 वर्ड्स हैं, तो मोटा मोटी ये 10 मिनट और 40 सेकंड पे खत्म होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि 80 के आसपास रहें, ठीक है भाई। चलो, बाकी जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल है ना। और जो क्लास की टाइमिंग रहेगी लाइव डिक्टेशन की, वो नॉर्मली 9:15 के आसपास रहेगी। सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन दबा लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी ही, क्या कहते हैं, हार्ड वर्ड्स, फ्रेजेस, है ना, इन सब के लिए भी क्लास स्टार्ट करेंगे। जब लाइव डिक्टेशन दे देंगे तो इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स रहेंगे उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या उनको कैसे छोटा कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। मतलब जो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो, क्या कहते हैं, हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलो, डिक्टेशन डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। और डिक्टेशन जो है वो 80 वर्ड पर मिनट पे रहेगी, ध्यान रखना। चलो, कोशिश करेंगे 80 पे रखने के लिए, उसके थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 82 83 समथिंग, तो आप अच्छे से लिखना और फिर टाइप करके देखना, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपने डिक्टेशन इन 5 सेकेंड्स। स्टार्ट। सर, I rise to present the budget for the year 2004-5. The budget has been formulated against the background of strong recovery in national income and agriculture, and an equally impressive improvement in our balance of payments. These and other developments in the economy have been covered in detail in the economic survey presented to the House a couple of days ago. I shall therefore be brief in reviewing the current economic situation in order to fulfill our social commitments and protect jobs. Government had to take over a large number of sick units and sustain them through injection of fresh resources. While some of them have turned the corner, a large number of them continue
to incur losses. The time has come to undertake a careful review of the performance of SIC units in the public sector with a view to reducing the drain on our resources. This the government proposes to do. Economic viability must be the principal test for the survival of an enterprise. Honorable members will recall that when our government took office in January 2000, an important task before us was to revitalize the planning process and to give a new thrust to the programs of development. I am happy to say that in the last 4 years, we have been able to achieve an unprecedented increase in the tempo of public investment. Within this aggregate, plans of individual states show a varied picture. Some states have managed their finances well. They have been able to raise additional resources and effectively utilize these to implement adequately sized plans, providing development and growth to their people. Unfortunately, some states, for reasons of their own, have used their resources for various other purposes. They have not invested their resources, including additional resources mobilized for development, and have also resorted to large overdrafts on the RBI. Unfortunately, despite these measures, some states continue to rely heavily on overdrafts even after March 2002. Their proposed deficits at the end of March 2004 would have harshly affected the size of their plans if these deficits were adjusted against next year's plan as per normal practice. In considering the ways of overcoming this problem, I have found myself in a predicament. On the one hand, no finance minister of the country can remain unconcerned about the size of a state's plan. On the other hand, if assistance is extended to defaulting states, the well-managed states can legitimately complain that they have not got their just rewards from the center for their better performance. For those states which have managed their finances well, I am working out a suitable scheme to provide some additional assistance to them in 2004-5. This is only just and appropriate. Mr. Speaker, sir, I am sure that the House will agree with me that despite severe resource constraints of its own,
The central government has done the maximum that it can to solve the state's problems. The rest, however, is up to them. In the last 4 years, the present government introduced a number of schemes for the benefit of the weaker sections of the society, particularly in the rural areas. These include the Integrated Rural Development Program, the National Rural Employment Program, and the two new programs announced by the Prime Minister on 15th August 2003, namely the Rural Landless Employment Guarantee Program and the scheme for providing self-employment opportunities to the educated unemployed. Each of these programs is designed to create opportunities for employment and income generation for particular target groups while also creating a productive assets. Finally, I should mention that the incentive schemes for better performance in selected areas initiated in 2003-4 will continue in 2004-5 also. As the House is aware, these schemes are designed to improve the functioning of the electricity boards and provide further impetus to the programs for small and marginal farmers, rural water supply schemes, environmental improvement in urban slums, construction of field channels in command area, development projects, and adult education for women and elementary education for girls. A lump sum provision of rupees 200 crores is being made for this purpose, lest the honorable members take me to be a magician who can do so much with so little. I hasten to clarify that the incentive scheme is designed to provide additional resources linked to performance for specified schemes. There are, of course, also separate substantial allocations for each of these schemes. I have only briefly touched upon the main priorities and objectives of the annual plan for 2004-5 in order to provide the maximum possible outlay for the 10th 5-year plan. I have taken special care to ensure that non-plan expenditure is kept at the minimum. However, certain increases in this expenditure are necessary and unavoidable. ठीक है दोस्तों, तो ये डिक्टेशन हमने दी है ना। ये जो एक्सरसाइज है वो कैलाश चंद्रा सर की एक्सरसाइज है 243 वॉल्यूम 12 की पहली एक्सरसाइज है ना। जो हमने लाइव डिक्टेशन स्टार्ट किया, जो आपने लिखा, इसको आप सभी लोग जो है टाइप करेंगे। देखो, जो पेपर होता है ना बेसिकली, तो बहुत सारे बच्चे जिनकी स्पीड अच्छी होती है उनको लगता है कि हमने बहुत आराम से लिख लिया, और जब वो टाइप करने जाते हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, फुल स्टॉप की मिस्टेक, मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आधे वर्ड बेचारों से बनते नहीं है क्योंकि उन्होंने शॉर्ट हैंड में लिख लिया, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान से उतर जाता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ठीक करने का टाइपिंग। जो भी आप डिक्टेशन लिखो उसको टाइप जरूर करो, ठीक है ना। टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आपने जिन लोगों ने टाइपिंग लिखी या जो बाद में वीडियो देख के टाइपिंग करेंगे, वो प्लीज इसे टाइप करें, ठीक है ना। टाइप करके आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं कितना हमने अच्छा लिखा और कितना हमारी मिस्टेक्स थी, ठीक है ना। चेक करने का तरीका किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बेसिकली इसी तरीके से, है ना। फिर भी अगर आप क्या कहते हैं थोड़ा बहुत चेक नहीं भी कर रहे हैं पूरी तरीके से, तब भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मैंने कौन कौन से वर्ड में मिस्टेक करी है, क्या क्या मुझसे नहीं बना। तो आप उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो डिक्टेशन है ये आप सभी लोग टाइप करेंगे, और ध्यान रखिएगा ये जो हमने लाइव डिक्टेशन की सीरीज स्टार्ट करी है उसमें जो है आपको डिक्टेशन मिलेगी, ठीक है ना। डेली हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिक्टेशन की सीरीज है ये कंटिन्यू रखें। कोशिश क्या करेंगे, कंटिन्यू तो रहेगी, जाहिर सी बात है ना। कोई बड़ा काम नहीं है ये, एक डिक्टेशन 2 डिक्टेशन डेली देना। तो आप सभी लोग जो है क्या कहते हैं इसको टाइप कीजिए। बाकी आप डिक्टेशन का टाइमिंग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये जो अभी स्टार्ट करा हमने डिक्टेशन की सीरीज, इसमें ये जो डिक्टेशन है आपको मिलेगी डेली, है ना, नोट करके रखें। अप्रोक्सीमेटली 9:15 पर ये क्लास स्टार्ट होगी एवरी इवनिंग, है ना, मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। और इसमें हमने अभी वॉल्यूम 12 स्टार्ट किया है। अब वॉल्यूम 12 क्यों स्टार्ट किया है भाई, तो काफी सारे जो बच्चे होते हैं वो कैलाश चंद्र से स्टार्ट करते हैं, 5 6 7 8 वॉल्यूम फटाफट कर लेते हैं, और फिर वो बीच के जो वॉल्यूम है उनसे छूट जाते हैं। तो वॉल्यूम जो 12 है उसकी आपको मिलेगी लाइव डिक्टेशन, और बाकी जो रिकॉर्डेड डिक्टेशन है ना, इस चैनल पे जो है आपको रिकॉर्डेड डिक्टेशन भी अपलोड मिलेगी, ठीक है ना। मंडे से जो है, मंडे से डेली सुबह मान के चलिए 8 बजे के आसपास डेली आपको एक रिकॉर्डेड डिक्टेशन मिलेगी, वो हम वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम 1 से। तो जो रिकॉर्डेड मिलेगी वो वॉल्यूम 1 से होगी, और जो लाइव हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 12 से स्टार्ट करें हमने। आज हमने 243 दी है, कल हम जो है 244 की डिक्टेशन देंगे, ठीक है। टाइम ध्यान रखना, कल 244 जो है एक्सरसाइज उसकी डिक्टेशन देंगे। जिन बच्चों की स्टेनो थोड़ी खराब है, अभी इनिशियल स्टेज में है, तो वो जो है 244 की प्रैक्टिस करके आए, ध्यान रखें इस बात को, आप प्रैक्टिस करके आए। जिनकी अच्छी है, जो अनसीन लिखते हैं वो अपना अनसीन लिखें, और जो सीन लिखते हैं वो 244 की प्रैक्टिस करके आए, है ना। कितनी प्रैक्टिस करनी है ये बहुत बच्चों का सवाल होता है, ठीक है। तो जब तक आपकी स्टेनो अच्छी नहीं होती, ठीक है ना, तो मिनिमम हर एक एक्सरसाइज को कितनी बार लिखेंगे, 10 टाइम्स लिखेंगे मिनिमम। जब तक आप 10 टाइम्स नहीं लिखेंगे, यानी कि अगर 840 की एक एक्सरसाइज है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 8400 वर्ड्स आपको डेली जो है लिखने पड़ेंगे। 10 टाइम्स लिखना है। शुरुआत के जो 1-2 बार जब लिखते हैं थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन वो फिर लिखते लिखते हैबिट हो जाती है तो बहुत ईजी लगने लगता है। तो मुझे लगता नहीं है कि आप 10 टाइम्स प्रैक्टिस करने के लिए 4 से 5 घंटे से ऊपर लोगे, मतलब ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है ना। पर फिर भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, 4-5 घंटे लग जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग 10 टाइम्स प्रैक्टिस करके आएंगे। जो लोग अभी इनिशियल स्टेज में है, बेसिक है, तो इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे, और अगली क्लास में हम इसकी डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज जो आपने लिखी है वो टाइप कीजिए, फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, मंडे टू फ्राइडे रात को 9:15 पर, ठीक है ना। इसी क्लास में हम धीरे धीरे और भी चीजें ऐड करते रहेंगे। आज सिर्फ एक लाइव डिक्टेशन दी है ना। कल फिर जब क्लास लेंगे तो इसको बढ़ाएंगे, है ना, 100 वर्ड पे, मतलब 100 पे भी देंगे इसको सेम डिक्टेशन, ताकि 100 वाले भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलो ये क्लास आज की यहीं एंड होती है, अब मिलेंगे आपसे